السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In today's meeting, we are going to discuss about the conversion of succinic acid, how we get succinic acid from ethyl acetoacetate. So, this is the formula of succinic acid: CH2CO8, CH2CO8. This is the starting material, ethyl acetoacetate. First, this ethyl acetate is converted into sodium salt by reacting with sodium ethoxide. You will get sodium salt here. This sodium salt is then reacted with chloroethyl acetate. This is chloroethyl. This part is acetate. Chloroethyl acetate, ethyl chloroacetate or chloroethyl acetate. This is then treated with. This is followed by acid hydrolysis. This is the acid hydrolysis. Reaction with concentrated NaOH followed by reaction with HCl oblique reaction with HCl. In this compound breaks in this way. CH3CO8 here, C2H5OH, and remaining is CH2COOH here, and CH here, CH2 here, remaining H here, COOH here. In this way, starting with this ethyl chloroacetate, ethyl acetoacetate, it will be converted into sodium salt, which is reacted with ethyl chloroacetate and followed by acid hydrolysis. Acid hydrolysis with the help of concentrated NaOH followed by hydrolysis with HCl. Two steps are there. HCl and decarboxylation occurs here. So in this way, you will get succinic acid starting from that. Now let us study how you can get succinic acid starting from diethyl malonate. This is the formula of diethyl malonate. This is diethyl malonate is first converted into sodium salt. What is the reaction? This involves reaction of sodium diethyl malonate with ethyl chloroacetate followed by hydrolysis and decarboxylation. What are the steps? Reaction with sodium ethyl malonate with ethyl chloroacetate. This is ethyl chloroacetate. Ethyl chloroacetate followed by hydrolysis and decarboxylation. Acid hydrolysis again. So here, this is a diethyl malonate. It is converted into sodium salt. Sodium salt is then reacted with this ethyl chloroacetate. This is ethyl chloroacetate. So this CH2C, CH2CO, C2H5. This part will get attached here. You will be able to see here CH to this, remaining this CH2CO, C2H5. This part will get attached. Okay, CH2COO, C2H5. This is then hydrolyzed. What will happen on hydrolysis? CH2COOH. This will be COOH 2 times. Okay, on heating, it will be converted into CH2COOH. One of the carboxylic acid, it will be removed in the form of CO2. This will be, and this H will come here. So that will be CH2COH. After the removal of carbon dioxide, what is remaining? H. So that will become CH2 and COH. In this way, we will get succinic acid.
Okay. In this way, starting with sodium ethyl diethyl malonate, it is reacted with ethyl chloroacetate followed by hydrolysis and decarboxylation. This gives you succinic acid. Now come to next. What is tautomerism? Keto-enol tautomerism. What is this keto-enol tautomerism? Now this keto-enol tautomerism, when two structural isomers, they are mutually interconvertible and exist in dynamic equilibrium. They are called as tautomers. These are the two forms, two structural isomers. They are mutually interconvertible. So when two structural isomers, they are mutually, means they are interconvertible and they exist in equilibrium, dynamic two-way equilibrium. They are called as tautomers, and the phenomenon is called as tautomerism. These are the two forms. This form, it contains keto functional group, so it is called as keto form, and this form contains enol functional group. In means a double bond. Double bond is here, and all means alcoholic group, OH group. So this is called an enol form. So when two structural isomers, they are interconvertible. They are convertible into each other and exist in dynamic equilibrium. There is equilibrium between these two. This phenomenon is called as tautomerism. And these structural isomer, they are called as the tautomers. For example, our acetone, it may exist in keto form, it exists in enol form. Okay, this is the keto form. If you transfer this hydrogen atom to this, it becomes OH, and this double bond, this single bond is shifted here, so double bond will be here. So this is enol form. This is keto form. Keto form, since it contains keto form, it is called as ketone, and it contains double bond and all OH form. Therefore, it is called as enol form. Okay? Here, the keto form changes into the enol form by migration of proton to carbonyl oxygen. Here, this ketone form, it changes into enol form. Yes. How does it change? By migration of proton to carbonyl oxygen. This by migration of this proton to carbonyl oxygen. This proton is transferred from CH3 group to the carbonyl group of the oxygen. Oxygen of the carbonyl group. Then a pair of electrons shifts from carbon hydrogen to carbon carbon. Pair of this electron, this is the carbon hydrogen bond. It gets shifted from carbon hydrogen to carbon carbon. Now, what is the difference between the resonance and tautomerism? The tautomers are two distinct molecules, while resonance have no real dependent existence. The tautomers are distinct molecules; they are different molecules. While resonance form, they have no real independent existence. They are only resonating form. They can be shown on the
taper only. Tautomerism involves the movement of the both electrons, both the electrons and atoms of hydrogen atom in the above case. Tautomerism involves movement of both. Here, what both electrons and atoms. Here there is movement of electrons. Yes, electrons get shifted, shift of electrons plus shift of atoms. This hydrogen atom is gets shifted here. So in this way, this in tautomerism what happens? There is shift of both electrons and atoms. Whereas in case of resonance structure, only there is shift of electrons. Shift of electrons, position of electrons, it changes. There is only shift of the position of the electron in case of in case of resonance. Aldehydes, ketones, and other carbonyl compounds, they show this type of tautomerism. It involves migration of proton from alpha carbon atom to the carbonyl oxygen by the following mechanism. This is the mechanism how gets shifted. This is the alpha carbon atom. From alpha carbon atom, this hydrogen atom gets shifted. This electron, this hydrogen atom is removed here from here. Yes, and these two electrons, they get shifted here. Simultaneously, there is shift of this electron to this. Negative charge appears here, and therefore this proton gets attached here, COH, and double bond. This hydrogen, two electrons from hydrogen, they get shifted here. So enol form here. So the tautomerism containing keto group, it is called as keto form. The other form which is containing a hydroxyl group attached to doubly bonded carbon, it is referred as the enol form. This kind of tautomerism, it is called as a keto-enol tautomerism. These structures, they are confirmed by the NMR spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy. This is the स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से मालूम करने के लिए, फंक्शनल ग्रुप मालूम करने के लिए एक खास तौर की स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. दिस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द कार्बन स्केलेटन. कार्बन स्केलेटन किस टाइप का है, इसके लिए मालूम करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं. So here, this is the keto form, this is the enol form. Okay, so in ethyl acetoacetate, this is the ethyl acetoacetate. Now come to keto-enol tautomerism in case of ethyl acetoacetate. This is the ethyl acetoacetate, 90% concentration here, and here 16%. Enol form 10% if you consider here. Ethyl acetoacetate, 90% keto form. These are the two keto groups. These are the two keto groups. This is the enol group. Now here electron, it is transferred. These are the resonating forms. This electron may be transferred here, and these are the resonating forms. This electron may be transferred here, so this electron to this. So here negative charge. So due to electron withdrawing capacity of the carbonyl group, the alpha hydrogen of the keto compound ionizes to form carbon ion. Now what does this carbonyl group? It attracts electron towards itself. So alpha hydrogen of a keto compound ionizes to form a carbon ion. This, it attracts electron towards itself. These electrons, they are attracted by the electron withdrawing power of the
electron attracting power of the ketonic group. Therefore, these two electrons they are attracted here, leading to formation of carbanion. The carbanion is resonance stabilized, may be represented in this fashion. Okay, resonance hybrid may be. So this negative charge it is dispersed from this to this. So these are the representing forms. On acidification, the protonation of cation at oxygen produces the enol form. This is the ketone form. Suppose we add here acidification. Then on acidification, enol form is formed here. On acidification, protonation of the cation at oxygen produces the enol form. Enol form is formed. Both of these forms are reversible and net result is the keto-enol tautomerism. Now keto-enol tautomerism in case of ethyl acetate. How keto-enol tautomerism exists in case of ethyl acetate. Ethyl acetoacetate or acetoacetic ester. So we see here. Here ethyl acetoacetic ester. This is the keto form of acetoacetic ester. This is the enol form of acetoacetic ester. Okay, this is the keto form. Ketonic group. This is the enolic form of acetoacetic ester. Now, Juder in 1863 assigned to it the keto structure, while Franklin and DuPont they assigned they had ethyl acetate as the enol structure. Enol structure was assigned by these two, DuPont and Franklin. Juder he assigned the keto structure, while Franklin and DuPont they showed that ethyl acetate it has the enol structure. The presence of each of the ketone forms in ethyl acetoacetate it is supported by two sets of reactions. Two sets of reactions are there which supports them. Now, ethyl acetoacetate. It forms a bisulfite compound with sodium hydrogen sulfide. Which type of compound forms bisulfite compound? Carbonyl compound. If compound it is containing any carbonyl group, then and then it forms addition compound with sodium bisulfide, hydrogen cyanide, etc. Okay, so this ethyl acetoacetate it forms a bisulfite compound with sodium hydrogen sulfide NaHSO3. It forms addition compound with ethyl acetate forms bisulfite compound with sodium hydrogen sulfide. That is addition product is formed here. This is a concrete or say proof that it contains a keto group. Next, ethyl acetate or acetoacetic ester, it forms cyanohydrin with hydrogen cyanide. Okay, this ethyl acetoacetate, it forms cyanohydrin with hydrogen cyanide. On reaction with sodium HCl, it forms hydrogen cyanide. It is again this reaction again suggests that this compound contains keto group. Again, ethyl acetoacetate it forms oxime with hydroxylamine H2NOH. This is the formula of hydroxylamine H2NOH. So this acetoacetic ester it forms oxime with hydroxylamine and phenyl hydrazine with phenyl hydrazine. These two reactions formation of oxime and phenyl hydrazine with phenyl hydrazine. This again gives proof that this compound contains this keto group.
Presence of ketone functional group is indicated by all above these 2 to 3 reactions. Formation of bisulfite addition product, formation of what do you say, cyanohydrin with HCN, these 2 reactions, and then condensation product with ethyl acid with hydroxylamine and phenylhydrazine. With hydroxylamine it forms oxime. With phenylhydrazone it forms phenylhydrazine it forms phenylhydrazine. Further, on reduction with sodium amalgam, it is shown how. On reduction with sodium amalgam, what happens when it is reduced with sodium amalgam or by using lithium aluminum hydride in pyridine, this C double bond O, it gets saturated. It is unsaturated here, double bond is here. So one hydrogen atoms get attached here and one hydrogen atom gets attached here. So these become CH3 CHOH and CH2 COO C2H5. This is beta hydroxy butyric ester. Okay. So on reduction with sodium amalgam or by using lithium aluminum hydride in pyridine, ethyl acetoacetate or acetoacetic ester, what it gives? Beta hydroxy butyric ester. This is beta hydroxy butyric ester. Okay, this is the beta hydroxy group. This is the alpha. This is a functional group. This is an alpha carbon atom. This is beta carbon atom. So this is beta hydroxy butyric ester. Next, when ethyl acetoacetate, it is hydrolyzed with dilute NaH solution in cold, and as it acidified and extracted with ether, it forms acetoacetic acid. It forms acetoacetic acid in this way. This acetoacetic acid on heating, it undergoes decarboxylation to give acetone. So thereby acetoacetic acid is a beta keto acid. This suggests that formation of this acetone suggests that it is a beta keto acid. Okay. So this suggests that it is a keto acid, and whatever compound from which this compound is derived, it is a beta keto ester. This suggests that ये कहां से फॉर्म हो गया? एसिटोएसिटिक फॉर्म हो गया. ठीक है, ये क्या है? बीटा कीटो एसिड है. लेकिन बीटा कीटो एसिड कहां से फॉर्म हुआ? वो फॉर्म हुआ ये एथिल एसिटोएसिटिक एस्टर्स. इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एसिटोएसिटिक एसिड ये क्या है? बीटा कीटो एसिड है. और बीटा कीटो एसिड से पहले ये क्या है? एसिटोएसिटिक एस्टर, दिस इज बीटा कीटो एस्टर. ठीक है, मीन्स देर इज प्रेजेंस ऑफ ketonic group at the beta position. These are the all evidences in the favor of keto form. पहले एविडेंस क्या है? ये फॉर्म करता है एडिशन कंपाउंड विथ बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड साइनोहाइड्रिन विथ हाइड्रोजन साइनाइड. ठीक है, और उसके बाद कंडेंसेशन प्रोडक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन एंड फेनिलहाइड्राजिन. इनके साथ में क्या करता है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट तैयार करता है. क्या कंडेंसेशन प्रोडक्ट? हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ऑक्साइन फॉर्म होता है और फेनिलहाइड्राजिन के साथ फेनिलहाइड्राजोन फॉर्म होता है. ठीक है, और जब हम इसका रिडक्शन करते हैं, व्हेन यू रिड्यूस दिस कंपाउंड, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एस्टर. दिस कंफर्म्स दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ a beta keto acid. Beta keto, there is a presence of keto group at the beta position. Further, when ethyl acetoacetic ester is hydrolyzed with dilute NH in cold and acidified, extracted with ether. ये सब करने के बाद पहले क्या कर रहे हैं? dilute NH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं कोल्ड कंडीशन में, उसके बाद हम एसिडिफाई कर रहे हैं. ठीक है, और एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ईथर के साथ. ये सब करने के बाद क्या मिल रहा है आपको? एसिटोएसिटिक एसिड मिल रहा है.
एसिटोएसिटिक एसिड को जब हम हीट कर रहे हैं तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन होके इसमें से CO2 निकल जा रहा है और CO2 निकल के एसीटोन आपको मिल रहा है। ठीक है, एसीटोन प्लस CO2 ये दो चीजें आपको मिल रही है। ये दो चीजों से आपको क्या कंफर्म हो रहा है कि एसीटोन, इससे ये कंफर्म हो रहा है कि this on heating yields acetone, showing that acetoacetic acid is a beta keto acid। ये क्या कंफर्म कर रहा है, ये जो कुछ कंपाउंड है ये बीटा कीटो एसिड है, यानी इसके अंदर में क्या है, बीटा पोजीशन के ऊपर कीटो ग्रुप है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही ये इंडिकेट हो रहा है कि ये कंपाउंड जिससे डिराइव हुआ है, ये जहां से फॉर्म हुआ है वो कौन सा कंपाउंड है, वो बीटा कीटो एस्टर है। ठीक है, उसमें बीटा कीटो, बीटा पोजीशन के ऊपर क्या है, कीटो ग्रुप। ठीक है, these are the evidences in the favor of keto group. Now evidences reactions supporting the enol form. Now ethyl acetoacetic ester, it forms now reactions supporting enol form. This ethyl acetoacetate acetoacetic ester, it reacts with sodium metal to form sodium derivative and hydrogen gas is evolved. This indicates presence of OH group. जैसे हम देखते हैं इथेनॉल के हम रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ में, क्या होता है, इथॉक्साइड फॉर्म होता है, सोडियम डेरिवेटिव तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ये सब क्या इंडिकेट करता है, द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। जैसे इथेनॉल के अंदर हम देखते हैं इथेनॉल इट इज रिएक्टेड विद, ट्वेल्थ के अंदर में अपने रिएक्शन स्टडी किए, इथेनॉल इट इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। दिस इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। सिमिलरली एथिल एसीटेट को जब हम रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ में तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम डेरिवेटिव। ठीक है, एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर OH ग्रुप है। फर्दर एथिल एसीटोएसिटेट फॉर्म्स एसिटिल डेरिवेटिव विद एसिटिल क्लोराइड। जब हम CH3COCl, ये फार्मूला है एसिटिल क्लोराइड का, जब एथिल एसिटोएसिटिक एस्टर को जब रिएक्ट करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में तो क्या करता है, एसिटिल डेरिवेटिव फॉर्म करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल डेरिवेटिव ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, किसी कंपाउंड का भी एसिटिल डेरिवेटिव अगर फॉर्म हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन है तो ये इंडिकेट करता है कि देयर इज OH ग्रुप, देयर इज प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन द कंपाउंड। ठीक है, पहले ये दो रिएक्शन हो गए। पहले ये रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम डेरिवेटिव तैयार होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट एसिटिल डेरिवेटिव फॉर्म होता है। थर्ड, when ethyl acetate it is created with alcoholic bromine solution। alcoholic bromine है, ब्रोमीन Br2 ब्राउन कलर का जो ब्रोमीन है हमने इसको डिसॉल्व किया अल्कोहल के अंदर, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक ब्रोमीन। ठीक है, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ब्रोमीन, डार्क ब्राउन कलर का, उसमें वेपर्स निकलते रहते हैं। ठीक है, उसको हमने डिसॉल्व किया अल्कोहल के अंदर, तो दैट बिकम्स अल्कोहलिक ब्रोमीन। तो हम ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन इज डिस्चार्ज, उसका ब्राउन कलर खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन अल्किन ग्रुप, अल्किन डबल बॉन्ड। तो क्यों चला जाता है, ये CBr यहाँ पर एडिशन हो जाता है, ये डबल बॉन्ड है तो इसका सिंगल बॉन्ड बन के यहाँ पर Br इस तरह से एडिशन हो जाता है, डाइब्रोमो डेरिवेटिव तैयार होता है। ठीक है, इस तरह से when ethyl acetoacetate it is reacted with alcoholic bromine solution, alcoholic bromine means bromine it is dissolved in alcohol। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, the brown color of the latter is the brown color of bromine is discharged, it is changed, it disappears, the brown color gets disappeared। Why? Because there is formation of a dibromo compound,
दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्किल डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की हम रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। फर्दर, ethyl acetoacetate, it produces a reddish violet color with FeCl3. Formation of reddish violet color is characteristic reaction of phenolic OH, ठीक है। phenolic OH यानी ऐसा OH जो एरोमेटिक रिंग को अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं, सब टाइप ऑफ OH विच इज अटैच टू एरोमेटिक रिंग। इस तरह की एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है फिनॉल की, इसको जो OH अटैच है इसको हम फिनोलिक OH कहते हैं, ठीक है। फिनोलिक OH की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, फिनोलिक OH इट गिव्स वायलेट और ग्रीन और ब्लू कलरेशन विथ FeCl3। वो क्या करता है, एक तो ब्लू या वायलेट या ग्रीन कलरेशन, इस टाइप के कलरेशन देता है, काय के साथ में, FeCl न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। फेरिक क्लोराइड का जो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसका उसके साथ में क्या देता है, इस टाइप का रेडिश वायलेट कलर देता है। So what does it mean? This point the presence of C double bond COH, structural unit in ethyl acetate as in phenolic compound। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं OH ग्रुप अटैच है, जिस तरह की फिनॉल के अंदर में OH ग्रुप अटैच है, किस चीज को अटैच है, डबली बॉन्डेड कार्बन को, ठीक है। OH ग्रुप अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन को, ठीक है। उसी तरह से इस एसिटोएसिटिक एस्टर में क्या है, ये OH ग्रुप अटैच है कहां पर, डबली बॉन्डेड कार्बन, कार्बन एटम है दैट इज अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। These four reactions are in the favor of, चार रिएक्शन आपको ये बताते हैं कि दिस इज दी सेपरेशन ऑफ कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। किस तरह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आई विल शो यू। वो आइसोमर्स किस तरह से सेपरेट किए जाते हैं। कीटो फॉर्म वाज ऑब्टेन्ड by cooling solution of ordinary ethyl acetate in petroleum ether, ठीक है। कीटो फॉर्म आपको आइसोलेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज ऑब्टेन्ड एज क्रिस्टल बाय कूलिंग solution of ordinary acetoacetic ester in petroleum ether at -70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कीटो फॉर्म किस तरह से ऑब्टेन होगा, एसिटोएसिटिक एस्टर का सॉल्यूशन, ठीक है, इन पेट्रोलियम ईथर इट इज कूल्ड टू -78 डिग्री सेंटीग्रेड। The enol form was obtained by treating suspension of sodium acetoacetic ester in petroleum ether at -78 degree with just enough HCl gas to decompose sodium salt. The product was an oil liquid। क्या करना है, इनॉल फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर को इन पेट्रोलियम ईथर, ये सब कुछ डिजोल्व करेंगे आप पेट्रोलियम ईथर में, इसको कूल करना है -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। उसमें से थोड़ा सा HCl गैस पास करना है, क्यों पास करना है, सोडियम साल्ट को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। जो कुछ ऑयली लिक्विड मिल रहा है, दैट ऑयली लिक्विड इज नथिंग बट इनॉल फॉर्म। The keto and enol forms are isolated as above and found to have distinctive properties confirming their structure. These are the differences between keto form and enol form. Keto form, long colorless needles, melting point -39. This is colorless oily liquid -78 degrees centigrade. Refractive index 1.4, 1.44. Density, here this is the density. No coloration with FeCl3, FeCl3 के साथ में कोई coloration नहीं रहता, यहाँ पर red violet coloration है FeCl3। This does not decolorize bromine solution, this decolorizes bromine solution, ठीक है। This is the end of this chapter.
Okay, so we'll stop here now.